Hi, Apoorva. Hello and welcome to. Hi, thank you. So, how excited are you for the new version of College Romance? Because now you're going to watch it on Sony Live. And Right. पहले होता था कि लोग YouTube पे एक दूसरे के साथ बहुत शेयर करते थे कि ओ ये वाली क्लिप बड़ी फनी है and all. But now it's like a full-fledged. We can just watch it on an OTT platform. So, what is that feeling like? It's amazing. I should not use the word upgrade, but I would say that OTT pe Ana is quite a big deal for a show because it's not that it was always an OTT show. It was on YouTube and then Netflix picked it up and then season 2 was on Sony Live. So we felt great that, oh, we must have done something right there as a Mhm. team. So that's always a great feeling. So इस season में क्या नया होने वाला है? Because college, when we, I think, actually, let me come back to the नया season वाला thing a bit later. I want to ask So something. So I have been hearing a bit from, let's say, Gen Z people कि उनके टाइप का शो नहीं मिल रहा आजकल उनको. जैसे, I am purely a millennial, so I would say कि when I was growing up, टीवी एंड देन नाउ ओटीटी एंड बीच में ऑब्वियसली फिल्म्स हमारे पास hmm, बहुत ज्यादा कंटेंट होता था हाई right, स्कूल से शुरू करके कॉलेज ड्रामा से शुरू करके एंड देन right. जॉब वाले रिलेटेड हाँ, बट अ लॉट ऑफ जेन ज़ी पीपल फील इन इंडिया कि उनके हिसाब का या उनके टाइप का या उनके रिप्रेजेंटेशन का शोज को नहीं मिल रहा है but a lot of people love college romance because they feel like okay this still gives an insight into college life कैसी होती yeah, है जो उनको नहीं मिल रही है I think otherwise so do you right. have to say anything on that. I mean, it's great that people find what they're looking for in our show. Dusra, the fact that it's so light and there's so much comedy happening. I mean, even though there are situations where there's a lot of drama, but Mm. that's always handled in a funny way. There's always humor. These characters have been sort of everyone's friends. I mean, the young people's friends, I would say, the audience's friends. Ki, हाँ, ये तो अपना बग्गा है, तो अपनी नायरा है. So that feel, going back to that kind of a feeling, I think for me personally, it makes me feel very calm when I watch a show like that. So I'm glad that we have that connection with the audience, and I think that's why people are eagerly waiting for the show. Also, there's an entire generation of people who's missed college, who's missed going to actual college. So it's sort of like their entry into the world of college in some way or the other. So I feel great that it's coming out right now. Do you have a favorite when, something that you like to watch growing up, Indian content related to college or high school that is still a favorite or something? I think I've always been an old soul. I think that word has also gotten old now, the old soul. But my father was always into watching good cinema, even though he has nothing to do with films or the industry. So I ended up watching those kind of films, and I ended up wanting to watch Omkara than anything else. So I've always been this person. Omkara was so not allowed only, by the way, back at home. So, but taste वैसा ही था कि मंडी देख ली, मंडी समझ में आ गई, सब Mm. तरह की फिल्म्स देख ली, सब समझ में आ गया, अब मुझे और देखना है, सो और सिनेमा दिखाओ. So I've always been that person. तो हाँ, बट गिल्टी प्लेजर तो है, हाई स्कूल म्यूजिकल सबने देखा है, मीन गर्ल्स तो हमने भी देखा है. So yeah, those kind of things I sometimes would go to. So one of the obviously the reasons why people love the show, as you also pointed out, is because कि it's fun, it's light-hearted, बहुत सारे comic moments है, जो कि होता भी है college में, like a Right. lot of why we all miss college life is because वो कभी वापस नहीं आता है. So what is the relationship like with your cast members? Because वो friendship जो आप बात कर रहे हो, वो I think हाँ, सबसे ज्यादा relatable होता है. कहीं ना कहीं हम सब, I mean, we go back and watch the original Friends, and then we start right. thinking of कि हाँ ये लाइफ में अपने लिए अपने भी ऐसे दोस्त हो and the theme plays and then people start watching let's say like a college romance and they start thinking of हाँ we have also desi versions of Yeah. that story कि हमारे अलग हाँ, lifestyle है अलग culture है अलग सब कुछ है absolutely. right so how was it to create that bond जो हमें दिखता है let's say on screen among yourself हाँ, as cast हाँ. members. I think we got along from the word go. First of all, like the OGs, I would say. I mean, everybody is an OG in the group, but जो पहले थे सीजन 1 में, हम लोग तो दोस्त बन गए, और जितने लोग एड ऑन हुए वो भी हमारे दोस्त बन गए. एंड दिस इज लाइक, यू गो टू अ सेट, यू फील कंफर्टेबल विद समवन. आप कभी कभार वैनिटी का दरवाजा बीच से खोल देते हो, कभी कभार साथ में खाना खा लेते हो, बट देन यू नीड योर मी टाइम, यू रिस्पेक्ट दैट अदर पर्सन's personal time also. On this set, nobody cares. They just barge in. We have that kind of a relationship. दरवाजा खोलना, व्हाट आर यू डूइंग, शट ऑफ योर ड्रायर ना, व्हाट इज दिस, इट्स इरिटेटिंग मी. तो हमारा वो वाइब है, लड़ लेंगे,
हमें पता है हम लड़ लेंगे, श्रेया और मैं तो बिल्लियां हैं बिल्कुल, बट हम वी आर ऑल्सो सिस्टर्स, so we have created that bond. Gagan and I also keep saying that we are brothers, and even though we are love interests on screen, तो ये जो ब्यूटीफुल फीलिंग है कि we can call up each other any time of the day, we can demand attention from them. I think वही होते हैं असली दोस्त, तो हम असल में दोस्त हैं हम सब, I could say that. So that I hope it translates on screen also. सो ये जो टीनेज थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, कॉलेज लाइफ वाली प्रॉब्लम्स होती है, जो बाद में फिर आप वापस देखते हो तो लगता है अरे दे वर नॉट इवन प्रॉब्लम्स, दे वर एक्चुअली सच नाइस मोमेंट्स, राइट? तो कितना नॉस्टैल्जिया आपके लिए था व्हेन यू वर डूइंग दिस कि ओके दिस वाज, और वाज इट, वुड यू से कि व्हाटएवर कॉलेज लाइफ यू हैड, कहीं ना कहीं हैव यू ड्रॉन फ्रॉम दोस एक्सपीरियंसेस टू एक्ट इन दिस सीरीज? Honestly, this is the only college experience that I've had shooting the show, because I've been acting since I was 14 years old, and regular schooling is not possible. So I did my graduation from correspondence. I'm doing my master's also from correspondence. But despite being a very good student, I never went to college, and I studied by myself. So the only memory I have of college is sitting in my night suit and like drinking cups of coffee and making notes myself, because कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने exams में. So यही memory है, but the experience that I got on this set, I think that is equal to a regular college experience जो इंसान को होता है. धीरे धीरे पहले I'm the nerd girl, सबको लगता है ये nerd है, धीरे धीरे अपूर्वा खुल गई है, फिर अब अपूर्वा सबसे बड़ी बुली है, बुली in the nice way I mean. तो वही हुआ है मेरे साथ जो कॉलेज में होता सेट पे हुआ है. So this is like थोड़ा wish fulfillment हो गया आपके लिए. हाँ, you can say that. I wanted to know कि there's this thing कि there was a whole time, like I think let's say 5 to 10 years ago, roughly that's the time I would say, कि when TVF was producing content exclusively, और जो भी YouTube में या हम Facebook में पता चलता था. So there's always been this idea कि जो भी YouTube TVF से आ रहा है, that is from the heart. Like whatever the stories are, it's straight from the heart. That is one of the reasons why, चाहे वो कितनी short बनी हो, like those episodes, no matter how small, or let's say the length of a series, yeah, whatever, has, stuck the chords with people. Now, obviously, now we've moved on to a whole era. COVID के बाद या COVID के दौरान से we've now completely moved on to an OTT space, जहाँ पे, it's everything sort of kind of shifted in a way. I'm not saying completely, but बहुत ज़्यादा shift हो चुका है. जैसे आपका show भी shift हो गया है, right? So just wanted to know, कुछ difference लगता है आपको medium की वजह से, कुछ difference होता है? I don't know, in whatever way is possible. I'm sure technically there are a lot of differences, but as an actor, it's never felt like that, because I've transitioned from films to ads, back to films to YouTube to OTT. मुझे फर्क नहीं लगा honestly. My idea is always to go on a set, perform, have fun. मुझे मजा आना चाहिए बस. मजा आना चाहिए in the sense that ये नहीं कि बैठ के हम टाइम पास ही कर रहे हैं, but the kind of work that I'm doing, the kind of filmmaker that I'm getting to talk to, the kind of filmmaker who's directing me, तो उन सब चीजों से आप कुछ ना कुछ लेके आते हो घर पे, and you kind of learn a lot. So that experience is important for me than the medium, and also connecting with the audience, वो भी जरूरी है मेरे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है. So whatever works for the audience works for me. Right. So Abhi, there was a time when if you did, let's say, a film, we've moved on so much to the social media age कि पहले होता था कि whatever you act in newspaper में आ रहा है, let's say, या online किसी website में आता है, आपको वो comments तो दिखते हैं. अब newspaper में तो वो भी option नहीं था कि audience बोल भी नहीं सकती है. Like the only reaction you would have is show देख रहे लोग. Like that's usually the only response you would have. Or if you have like real events where you are going and meeting with audience, तो आपको response दिख रहा है. I want to know, अब जब बिल्कुल सोशल मीडिया पे आपको पता चल जाता है ना कि जैसे वो शो हुआ, people can actually come to, let's say, your profile and say, right, कि trailer is here. So वो shift कैसा? Because you've been, like you said, you've been acting since, let's say, 14 to now. How does this shift feel like? ये जो connect है, उसके बारे में मुझे जानना था कि जो audience के साथ एक relationship है. हाँ जी, मैंने वो ट्रांजिशन होते हुए देखा है कि नंबर्स मैटर करते थे, बॉक्स ऑफिस नंबर्स मैटर तो आज भी करते हैं, बट उससे ही हमें सिर्फ पता चलता था कि क्या हो रहा है. देयर हैव बीन टाइम्स दैट रात को 2-3 बजे भी को एक्टर्स को फोन किया, यार डू यू नो द कलेक्शन राइट नाउ, कितने पैसे कितने हुए हैं. सो ये सब होता था. और आज हम देखते हैं कि ट्रेलर पे कितने व्यूज हैं, उससे भी आइडिया लग जाता है, या एपिसोड पे कितने व्यूज हैं, या कमेंट्स देखो ठीक कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ. सो it's like there are always pros and cons. It's a blessing definitely, because आप
डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस से। एज एन आर्टिस्ट अगर आपको कोई इंसान पसंद करता है तो उसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके सोशल मीडिया से कि आपका ये काम आने वाला है। दे डोंट हैव टू you don't have to rely on the PR that's happening around और हो रहा है नहीं हो रहा है। So you can do your own sort of mini PR वो आप कर सकते हो हैंडल खुद से। So that's great to inform your true fans कि भाई ये काम आ रहा है प्लीज देख लेना, और प्यार तो मिलता ही है। तो that is also a great thing कि आपको first hand सारी feedback और criticism और प्यार सब मिल जाता है। But what is the flip side like? Because what we've been noticing is that कि इस send button से मतलब इसमें obviously pros है, obviously like you said, you know, a fan can come directly tell you, you know, we love you, we love your work. There's also like a lot of people who use this button to sort of try and pull down actually people. Like it's always been happening, and obviously when you are somebody who's associated with the entertainment industry, it becomes so much difficult, I feel, because otherwise भी चलो लोग करते हैं troll करना, तो now it's like a thing. हाँ, पहले रिश्तेदार करते थे, आज कोई भी कर लेता है आके। So how difficult it is for that? Because I understand a good bit of it, जहाँ पे आपको immediate पता चल रहा है कि somebody is liking your work. But how is it like to see the other side of it when, you know, people start talking about everything? Like, I don't know. I mean, it may not be so for you particularly. I'm not sure. But I'm just asking. जैसे when you're women, there's just a random scrutiny up. सही बोल रहे हो बिल्कुल। एकदम से अरे वो रोल में तो आप ऐसे करते हो, लेकिन आपने इसमें ये पहन लिया है, like let's just say, like for example, या आप रोल में तो ऐसे होता है, so just wanted to know about that. Just the fact that you exist is enough for people to diss you, call you names, make you feel bad. बड़े सारे लोग होते हैं यार, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे कुछ लोगों का अच्छा फीडबैक आता है, अच्छा क्रिटिसिज्म आता है, आप समझते हो कि हाँ ये मेरी ऑडियंस को चाहिए या ये मुझसे गलती हुई है। जैसे पीछे मैंने शो किया था, जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो थी, पर जब हम फ्लोर पे गए तो कुछ और ही हो गया वो, एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ हर्टफुल टू सर्टेन पीपल, और मेरे को भी नहीं करना था। बट देन एज एन एक्टर मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं निकल जाऊँ सेट से, यू नो, वॉकआउट नहीं कर सकती हूँ। सो आई डिड दैट शो. When it released, a girl texted me, "Ma'am, you know what? This is what I felt," and I got the opportunity to apologize to her and explain my stance to her. Told her that I can't diss the show publicly because किसी का पैसा लगा है, कितने सारे लोगों ने काम किया है. I can't do that, but I get what you're saying, and I'm sorry that you had to go through this. So वो अच्छा है, लेकिन ऐसी भी चीजें होती है कि फालतू में गालियां पड़ती हैं। मुझे लगता है कि यार बेचारे, अब तो मुझे यही लगता है बेचारे, इनके पास अपना वेंट आउट करने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये हमारे पे कर रहे हैं। अभी कल ही इनफैक्ट there's this person, I don't know if I should name them or not, because उन्होंने जो बोला है वो बड़ा ही बदतमीजी करी है। तो मैंने कहा कि मेरे को किसी ने बताया, श्रेया ने बताया, इनफैक्ट श्रेया मेहता who's in the show, she told me that you know this person written this about me. कौन है, कोई इन्फ्लुएंसर है क्या? I don't know, but उसने ये तेरे बारे में बोला है। I found out, I just wanted to know, curiosity, क्योंकि अब genuinely इतनी thick skin हो गई है, मुझे बस जानना था कि कितना क्रिएटिव हो सकता है इंसान इंसल्ट में। तो मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा यार वो ऐसा ही है, वो बेचारा ना फेम के लिए करता है, लोगों को गालियां देता है, तो जस्ट डोंट टेक इट, आई एम नॉट टेकिंग इट टू माय हार्ट, मुझे बस जानना था। सो ऐसे लोग भी होते हैं जो फेम के लिए किसी को डिस करेंगे या कुछ, मतलब इट्स सैड बट ठीक है, दैट्स हाउ इट जस्ट लाइक इट जस्ट प्रोजेक्ट्स बैडली ऑन देम, आई फील। अब I think I'll come back to my second question जो मैं पूछते रही। Sorry, I gave a whole monologue because trolling तो मैंने ही रोक के मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया था, so I'm just coming back. मुझे जानना था कि तो अब as audience what new stuff should we expect from this season? अब नया क्या है? पुराने जो चीजें हमें अच्छी लगती थी वो कितना है इसमें? सब कुछ है। जो ओरिजिनल फ्लेवर तो रिटेन किया है हमने, और हमने भी एज एक्टर्स कोशिश किया है कि हम इन्वॉल्व रहें, ताकि क्योंकि हम 4 साल से कर रहे हैं ये शो, ये कैरेक्टर्स हम जी रहे हैं, तो we know a lot about it and it's just ingrained in our system now. So all of us had suggestions and all of us had one-liners, jokes that were also accepted by the director and everybody else, which is great. तो वो सब फ्लेवर तो रहने ही वाला है, but जिस तरह से स्टोरी लाइन प्रोग्रेस हो रही है, that is amazing. There are going to be some amazing twists and turns that people are going to go crazy about. So yeah. Okay. ठीक है, so I think I'll just rest of it. I think देख के पता चलेगा अब मुझे. हाँ. Which is I think tough. It's like you have to wait for something to come out season this season. I think we're still not used to that format. जहाँ बहुत आदत लगती है ना, मैं 6 season साथ में आ जाते हैं and then we are like very happy about it कि हाँ एक बार में खत्म करेंगे. I think it's still challenging for a lot of us to wait
But I think that is how you know that your show has so much love, that people are waiting Absolutely. every year ki aayega season, Absolutely. you know, like very हाँ. dedicatedly they're waiting. So best of Yeah. luck. Thank you so I'm sure much. it's going to be amazing as well. And it was lovely, lovely talking to you. You too. Thank you so much.